ॐ प्रादानिकं रहस्यम् अस्य श्री सप्तशतीरहस्य त्रयस्य नारायण ऋषि अनुष्टव छन्दः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता यत्रोक्त फलाभ्याप्त्यार्थं जपे विनियोगः राजोवाच भगवान्नवतारामे चण्डिकाया स्वयोदित एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्राधानं वक्तुमहिमसि आराध्य यन्मया देव्या स्वरूपं येन च द्विज विधिना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे ऋषिरुवाच इत्थं रहस्यं परमनाख्येयं प्रचक्ष्यते भक्तोऽशीति न मे कञ्चित् बाबाच्य निराधिप सर्वस्याद्या महालक्ष्मी श्रीगुणा परमेश्वरी लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्त कृष्णं व्यवस्थिता नातुलङ्गं गदाखेटं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति रूपमूर्धनि तप्तकाञ्चन वर्णाभ्या तप्तकाञ्चनभूषणा शून्यां तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि सा भिन्नाञ्जनः संकासा दंष्टाङ्कितरवरानना विशाललोचना नारी बभुव तनुमध्यमा खड्गपात्र शिरखेटै रलं कृत चतुर्भुजा कबन्धवारं शिरसा बिभ्राणा हि सरस्वरस्वजं सा प्रोवाच महालक्ष्मी तामसी प्रमतोत्तमा नाशकर्म च मे माता देहि तुल्यं नमो नमः तां प्रोवाच महालक्ष्मी तामसीं प्रमतोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते महामाया महाकाली महामारी क्षुधातृषा निद्रातृष्णा च कविं चैकवीरा कालरात्रि द्रुरोत्यया इमानि तव नामानि प्रीतिप्यापात्यानि कर्मभिः एवि कर्माणि ते ज्ञात्वा योधीते सुस्मृते सुखं तामित्युक्त महालक्ष्मी स्वरूपम परं रूप सत्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं ददौ अक्षमालाङ्कुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी सा बभूव वरा नारी नामान्यस्य च सा ददौ महाविद्या महावाणी भारती वाक्सरस्वती आर्या ब्राह्मिकमे कामधेनु वेदगर्भाजसीधीश्वरी अथो वाज महालक्ष्मी महाकालीं जरू सरस्वतीं युवा जनयतां देव्यो मिथुने स्वानुरूपतः इत्युक्ता ते महालक्ष्मी ससर्ज मिथुन स्वयं अहिरण्यागर्भ रुचिरौ स्त्री पुंसौ कमलासनो ब्रह्मन् विदे विरिञ्चेति धातरित्याहतं नयनं श्रीपद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां श्रियम् महाकाली वारती च मिथुने सुजदस एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते नीलकण्ठं रक्तबहुं श्वेतांगं चन्द्रशेखरं जनयामास पुरुषं
महाकाली स्थितं श्रियाम् सरुद्रः शङ्करस्ताणुः कपर्दी च त्रिलोचन त्रैविद्या कामधेनु शास्त्री वाशाख्यरस्वरा सरस्वती स्त्रियं गौरी कृष्णं च पुरुषः नृप जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते विष्णुकृष्ण ऋषिकेशो वसुदेवो जनार्दन उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगा शिवा एवं युवतया सद्या पुरुषदं प्रवेदिरे चक्मुस्मान्तो नुपश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनान् ब्रह्मणे प्रददौ पद्मीं महालक्ष्मीं रूपत्रयीं रुद्राय गौरीवरदां वासुदेवाय च सेयं सौराय सह सम्भूय वीरैञ्चोण्डमजीजनान् विभेद भगवान् रुद्र सद्गौर्या स वीयवान् अंडमध्ये प्रधानादि कार्यजातमभून्नुप महाभूतात्मकं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं पूषो प्रालयामास तल्लक्ष्म्या केशवा संजहार जगत्सर्वं सह गुर्या महेश्वर महालक्ष्मी महाराज सर्वसत्त्व महीश्वरी निराकारा च साकारा शैव नानाविधा नभृत् नामान्तरै निरूप्येषा नाम्ना नान्यकेनचित् ओम जय जय प्राधान्यकरस्यं सत्यसंधमो कामान् पुण्यवन्तु मनोरथान् मा दिव्यार्पणमस्तु। ॐ वैकृतिकं रहस्यं ऋषिर्वाच त्रिगुणातामसी देवी सात्त्विकीया त्रिदोदिता सा सर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवती जयते यते योग निद्रा रुक्ता महाकाली तमोगुणा मधुकैटभनाशार्थं या तुष्टा वाम्बुजासना दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाञ्जनप्रभा विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया स्फुरद्दशनदंष्टा सा भीमो रूपा विभूमिव रूपस्यौभाग्य कान्तीनां सा तुष्टा महिषा महिश्रिय खड्ग बाण गदा शूल चक्र शंख भूषुण्डी वृत परिघां कार्मुकं शीर्षं परिघां कामुकं शीर्षं निश्योत रुधिरं दयो ददौ एषा सा विष्णुवी वैष्णवी माया महाकाली दूरत्यया आराधिता वशीकुर्या पूजा कर्तुश्चराचरम् सर्वदेव शरीरेभ्यो याविभूतामितत्प्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी साख्यान्न हि समर्दिनी श्वेतानन्यानिलभुजा स्वे सुश्वेतस्तनमण्डला रक्तमध्या रक्तपादा नीलजम्भोरुरुन्नदा सुचित्र जगना चित्र मल्याम्बर विभूषणा चित्रानुलेपना कांति रूप सौभाग्यशालिनी अष्टाम दशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुध्यान्यतत्र मुख्यन्ते दक्षिणाद् करक्रमात्
अक्षमाला च कमलं बाणोऽस्ति कौलिशं गदा चक्रं त्रिशूलं परशु शङ्खो घण्टा च पाशकः शक्ति दण्डश्चर्मजागं पानपात्रं कमण्डलुः अलङ्कृतभुजामिभिरायुधैः कमलासनानां सर्वदेवमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां नृप पूजयेत् सर्वलोकानां स देवानां प्रभुवैवयेत् प्रभुर्भवे गौरी देहात् समुद्भूता या सती करुणास्या साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिह निर्वीणी शुम्भासुरनिवर्हिणी ददौ चाष्टभुजा बाणो मूसले शूलचक्रभूत् शङ्खं घण्टां लाङ्गलं च कार्मुकं वासुधाधिप एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञात्वं प्रयच्छति निशुम्भ मथनी देवी शुम्भासुरनिवर्हिणी इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनि तव पार्थिव उपासनं जगन्नाथु पृथगासां शामय महालक्ष्मी यदा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पुष्टतो मिथुनतया वीरञ्चीश्वरया मध्ये रुद्रो गज्जो च दक्षिणे वामे लक्ष्मा ऋषिकेशः पुरतो देवतात्रयम् अष्टादश भुजा मध्ये वामे चास्या सहसानना दक्षिणेष्टाभुजा लक्ष्मी महतीति समुच्चयेत् अष्टादश भुजा चेषा यदा पूज्या नराधिप दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरमो योस्तदा कालमृत्यु च संयुज्य सर्वारिष्टप्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिवर्हिणी नवास्याः शक्तयः पूज्यास्तथा रुद्र विनायकौ नमो देव्या इति स्तोत्रे महालक्ष्मी समुच्चये अवतारत्रयात्तायां स्तोत्र मन्त्रास्तदाश्रयः अष्टादश भुजा तेषा पूज्या महिषमर्दिनी महालक्ष्मी महाकाली शैव प्रोक्त सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी महिषान्तकर्यकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः पूजये जगतां धात्रीं चंडिका भक्तवत्सलाम् अर्घ्यादिभिरलङ्कारी गन्धपुष्पै तथाक्षयक्षतैः धूपै दीपैश्च नैवेद्यै नानाभक्ष्यसमन्वितैः रुधिराक्तेन बलीनां मांसेन सुरया नृपम् वलिमांसादिपूजयेयं विप्रवज्यामयेरिता तेषां किल सुरामांसे नोक्ता पूजानुपक्वचित् प्रणमा च निययेन चन्दनेन सुगन्धिना सत्कर्पूरेश्च ताम्बूले भक्तिभावसमन्वितैः वामभावे ग्रतो देव्या छिन्न शीर्षं महासुरं पूजयेन्नहिरं येन प्राप्तं सा पूज्यमीशया दक्षिणे पुरितसिंहं समग्रं धर्ममाहेश्वरं वाहनं पूजयेत् देव्या धूतं येन चराचरं
ऊर्जास्तवनं धीमां तस्य एकाग्रमानस ततः कृताञ्जलि भूत्वा स्तुवित रचितैरमैः एकेन वा मध्यनेमेन नैकेनेतरयोर्य चरितार्थं तु न जप्ये जपञ्छिद्रमवाप्नुयात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वा मूर्ध्नि कृताञ्जलिः क्षमापये जगद्धात्रीं मुहुर्मुहुरतन्नृतः प्रतिश्लोकान् च जुहुयात् पायसं तिलसर्पिषा जुहुयात् स्तोत्रमन्त्रे वा चण्डिकायै शुभं हवि भूयो नासपते पदे देवीं पूजयेत् सुसमाहिता प्रयतापाञ्जलिः प्रगृह्य प्रणम्यारोपजार्मणिं सुचिरं भावये तेषां चण्डिका तन्नयो भवेत् एवं य पूजयेद भक्त्या प्रत्ययं परमेश्वरीं भुक्त्या भवभोगान् यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृतस्य पुण्यानि निर्दहेत परमेश्वरी यो पूजयेत् नित्यं चण्डिका भक्तवत्सलां भस्मीकृतस्य पुण्यानि निर्दहेत परा परमेश्वरी यथोक्तेन विधानेन चण्डिका सुखमाप्स्यसि एवं ज पूजयेत् भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीं भुक्त्या भुवान् यथा कामं देवी सम्पूज्यमाप्नुयात् यो न पूज्यते नित्यं चण्डिका भक्तवत्सलां भस्मीकृतस्य पुण्यानि निर्दहेत् परमेश्वरी तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीं यत्तोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि ओं वैकृतिकं रहस्यम् ओं सत्यकामान् पुनर्वधां महादेव्यार्पणमस्तु ओं मूर्तिरहस्यं ऋषिर्वाच ओं नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दया स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्यात् जगत्त्रयं कानकोत्तम कान्ति सा सुकान्ति कनकाम्बरा देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तम भूषणा कमलाङ्कुशपाशाब्जैरलं कृत चतुर्भुजा इंदिरा कमला लक्ष्मी सासी रुक्मीम्बुजासना या रक्तदन्तिका नामो देवी प्रोक्तो मया नघ तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वव्यापं रक्तंबरा रक्तवर्णा रक्तसर्वाङ्गभूषणा भूषणा रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशा विधिभीषणा रक्ततिक्मनखा रक्तदशना रक्तदन्तिका पतिं नारी भानुरक्ता देवी भक्तं भजे जनम् वसुदेव विशालासा सुमेरुयुगलस्तने दीर्घालम्बावती शूलो तावतीव मनोहरो कर्कशावती कान्तो सर्वानन्दपयोनिधि भक्तान् सम्प्रयये देवी सर्वकामोद्घुस्तनो खड्गं पात्रं च मूसलं लाङ्गलं च बिभर्ति सा आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरी
देवी योगेश्वरीति अन्नया व्याप्तमखिलं जगत्स्थावरजङ्गमम् इमां या पूजयेत् भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम् भुक्ता भोगान् यथा कामं देवी सम्पूज्यमाप्नुयात् अधीतेयमिमं नित्यं रक्त्या वपुस्तवं तं सा परिचरे देवी प्रतिं प्रियमिमाङ्गना शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना गम्भीरनाभिस्त्रीबली विभूषिततनूदरी शुककसमोत्तुङ्ग भृतपीनघनस्तनी मुष्टिं शीलमुखा पुन्नं कमलं कमलालया पुष्प पल्लवमुक्ता मूलाद्दिफलाढ्यां सागसञ्चयं काम्यानन्दरसे युक्तं ह्युतृणमृत्युभयापहं कामुकं च स्फुरत्कान्ति विभूति परमेश्वरी शाकम्भरी शताक्षी सा शैव दुर्गा प्रकीर्तिता विश्रोका दुष्टदमनी समनी दुरितापदाम् उमा गौरी सदा चण्डी कालिका सा च पार्वती शाकम्भरी सुवन्ध्यायं जपं सम्पूजयन् मन अक्षयमश्नुते शीघ्र मन्नपानामृतं फलं भीमापि नीलावन्ना सा दशनभासुरा विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा चन्द्रहासं जडमरुं शिरपातुज विभृति एकवीरा कलरात्रिं शैवाक्ता कामदा स्तुता तेजोमण्डलदुर्धर्षा भ्रामरी चित्रकान्तिभिर्चिता चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभूषिता चित्रभ्रमणरमाणी सा महामारीति गीयते इत्येता मूर्तयो देव्याः याख्यात्या वसुधाधिपं जगन्नाथश्चण्डिकायाः कीर्त्यं कीर्तित कामधेनवः इत्यं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित् त्वया व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनां भीष्टफलम् प्रदायकं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन देवीं जप निरन्तरं सप्तजन्मार्जिते घोरे ब्रह्महत्या समैरपि पाठमात्रेण मन्त्राणां मुच्यते सर्वज्ञविषयैः दिव्याधानं ध्यानं मया ख्यातं ब्रूयाद्गुह्यतरं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदाम् इत्येतस्यास्त्वं प्रसादेन सर्वमानो भविष्यसि सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयीं जगत् अतो विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी मूर्तिरस्यम् ओम सत्यसन्तु कामान् पुण्यभवन्तु मनोरथां मा देव्यार्पणमस्तु। ओम